as trajectory or path. जिस पे ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, मींस पाथ ऑफ मूवमेंट, पाथ ऑफ मोशन. Okay, now see, at some time the velocity of the object, here it is this velocity, here it is this velocity, here it is this velocity, and here it is this velocity, and here the velocity is this. हमसे पूछा गया कि where or at what instant velocity will be perpendicular to initial velocity. इस सब के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द एसेंस. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कब हो जाएगी? सर एट द एंड. जरूरी है. ये जरूरी नहीं है. एट द एंड क्या होगा? ये 37 का बनेगा. दिस एंगल विल बी 37. और देखो ऊपर 37 था, नीचे 37 था, ये सिर्फ 74 का हुआ. हालांकि इस क्वेश्चन में 37 का एंगल अगर हम ले रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल पॉसिबल नहीं है. बट अगर मान लो 60 से 45 से एंगल ज्यादा होता तो 90 का बनता. अगर मैं यहाँ 45 लूं, यहाँ भी 45 होगा तो 90 का एंगल एट द एंड बनेगा. आपने जो कहा, मैं उस एसेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि आपने क्या कहा. देखिए, दिस इज अ प्लेन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन दिस डायरेक्शन. It is, this angle is of 45, and here the velocity, if it drops here, then here its velocity will be like this, and this angle will also be 45, this angle. ऐसा मैंने कैसे कह दिया? इसलिए कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और इधर वाली जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो अपोजिट हो जाएगी, इसलिए ये एंगल बन जाएगा. तो आप यहां कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फाइनल वेलोसिटी in this case only. But angle is different, then you can't say. Okay, so just try to understand what I want to say. I'm just taking a coordinate axis, and suppose this is a vector. Its coordinate here is 3, 4, 3. And if we want to draw another vector perpendicular to it, अगर मैं इसके perpendicular component draw करूं, तो what should be the component here? This component will be, this angle is 90, and if this angle is 90, then its component in this direction is 4, and in this direction it should be 3. So here it is 3 minus 4. Means this angle theta 1 and theta 2
तो अगर मैं लिखूं तो दिस इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आज हो पाएगा। tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan theta 1 into tan theta 2. It is the formula as we have studied about the sin theta and cos theta, a plus b. तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। इसका एक और फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हैं tan theta 1 minus theta 2 is equal to tan theta 1 minus tan theta 2 and divided by 1 plus tan theta 1 into tan theta 2. So here it should be 90. I'm just using this concept. It is, I'm generalizing the concept x1 y1 and this is x2 y2. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब tan थीटा 1 अगर आप लीजिएगा, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, इट विल बी 90 क्योंकि दोनों को 90 करना है। एंड दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 divided by 1 minus tan theta 1 into tan theta 2. And tan 90 आप जानते हो क्या होता है? Infinity. Infinity can be written as 1 by 0. So this is equal to 1 by 0. It means what? Lower term is 0. ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा आपको? This is the conclusion. मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 minus tan theta 1 into tan theta 2. Tan theta 2 is equal to 0. tan 90 is infinity, so it can be written as 1 by 0. आप याद रखिएगा, जब आपको infinity को मैथमेटिकली यूज करना है, you can write 1 by 90, 1 by 0. लोअर टर्म 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा 1 into tan थीटा 2 is equal to 1. तो और ये क्या चीज है? m1 into m2 that is equal to 1. ये आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे। When m1 into m2 is 1, then both lines are perpendicular to each other. Okay? Is it clear, bete? Is it clear? Okay. तो इस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। We will deal this question on the next lecture. Okay? So you can leave now the class. Okay, bye, bete. In simple language, you can say throwing an object means when you throw an object, the motion of the body is said to be a projectile under the gravity. Means motion of a particle, आप इसको define अगर करना चाहते हो, there is no need of definition, but if you want to define motion in a plane, motion in a plane has acceleration along one axis. मीन्स मोशन जो है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के प्लेन में हो रहा है। सपोज आई हैव टेकन अ मोशन इन एक्स वाई प्लेन। मोशन, इफ मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, मीन्स देयर इज द वेरिएशन
in x and y both, x and y coordinates. But acceleration A is only in or along one axis. This is the nature of projectile motion, and here xy plane means आप जो object को throw करते हो, suppose you have thrown an object vertically upward, it doesn't mean that is not a projectile. That is also a projectile which has motion only along x-axis. Now see, how can we deal with this? Today just we are going to check the different aspect of projectile. See, suppose there is an axis. This is the, let's say this is the x-axis and this is the y-axis. Listen carefully. Today's class is very important related to the projectile. And let's take an object thrown in this direction with some velocity. Its initial velocity is u. Let's say the initial velocity is u, and it is making an angle theta with the horizontal. Okay. Now, just we have to divide it into two parts. First is the horizontal. I'm just writing here horizontal. Horizontal motion. I'm going to deal both the motion differently, and here I'm going to write vertical motion. Vertical motion. Horizontal motion and vertical motion. Just we are going to divide it. Okay. If we talk about the initial velocity horizontal, u horizontal. Okay, then it will be u cos theta. It is u cos theta. So we can say initial horizontal velocity is u cos theta. And at the same time, if we talk about the initial vertical velocity, then uv, I'm just giving the symbol uv, initial vertical velocity, and that will be u sin theta. That is u sin theta. I hope this is clear to all. Acceleration in horizontal direction. Acceleration horizontal is 0. But at the same time, acceleration vertical is minus z. Acceleration due to gravity, that is along the negative y-axis. So in the vertical direction, there is the acceleration, but in the horizontal direction, there is no acceleration. These are the pre-informations we know related to a body which is in xy plane or in a vertical plane. Now see how will the object will move. The object will move on this path. See, this will be the path. In this way, the object will move. At this different point, the object has different velocity and different positions. Suppose this is a point A